Hello, good evening, everyone, beta. So we will go ahead and we will start taking some of the micro questions today. We'll try to see how much we're able to cover in the next few days. The aim is to go ahead and finish the microeconomics, all possible questions of microeconomics using these tests. Okay. Look at the first question. Try to answer this question in the chat window. Economic activities cover only activities that result in production that are exchanged in market, only activities that people engage for profit, only activities that can potentially be delegated to someone else, only activities that are entered into the national account. What do you think is the correct answer to this question? Economic activity. What should be the correct answer to this question? Some people are saying A, some are saying D. Okay. So the correct answer to this question, अगर हम एक ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की बेटा, the correct answer to this question is answer number A. Any activity which is there in the market, right? Any activity which is treated in the market is called as an economic activity. तो इसका correct answer हो जाएगा answer number A. Okay. So an activity which is related to the use of scarce resources called economic activity, which are classified as production, consumption, investment, exchange, and distribution. So economic means anything which is related to activity which is dealt in the market. National account से रिलेशन नहीं है इसका. इसका रिलेशन है कि क्या वो मार्केट में हम उसको उस एक्टिविटी को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Is price involved or not? That is the right answer to this question. ठीक है. Okay, beta, let's go to the next question. Question number 2. Try to answer this question. The optimal point on the production possibility frontier depends on efficiency, preferences, feasibility, all of these. Optimal point on production possibility frontier. Try to answer this question, beta. What does it depend on? Okay. Some are saying answer is D. तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बेटा. फर्स्ट, व्हाट इज अ पीपीएफ? रिवाइज क्विकली विद मी. पीपीएफ shows maximum possible output combination of two goods. मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड. माने अगर मैं यहाँ पे गुड एक्स ले लूं, यहाँ पे मैं गुड वाई ले लूं, तो ये मेरे को पॉइंट ए बता रहा है कि हम मैक्सिमम गुड एक्स का x1 और y का y1 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज पॉइंट ए. सिमिलरली इफ आई टेक पॉइंट बी, तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम हम गुड एक्स का x2 और y का y2 प्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट. So therefore it goes ahead and it tells us what are the different combination of two good that can be produced. समझ में आई ये बात बेटा?
इस चीज में वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द स्लोप of production possibility frontier, that is called as opportunity cost. That is called as opportunity cost. ठीक है? So what is opportunity cost? Opportunity cost is how much of one good you have to give up to produce an additional amount of the other good. हमें एक गुड कितना देना पड़ रहा है दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है. अब पीपीएफ में दो चीजें हमें याद रखना है. वी हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स. द फर्स्ट इज दैट इफ माय पीपीएफ इज कॉनकेव, जैसे ये, if my PPF is concave, it means that I have increasing opportunity cost. And if my PPF is a straight line, it means I have constant opportunity cost. अगर हमारा PPF concave है, then we have increasing opportunity cost. And अगर हमारा PPF एक straight line है, then we have constant opportunity cost. Similarly, बेटा rarely, but अगर एग्जाम में पूछ लें कि what happens if PPF is convex, तो it will be decreasing opportunity cost. It will be decreasing opportunity cost. ठीक है. अब बेटा एक और चीज हमें पीपीएफ के बारे में जाननी है, दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीएफ, all points on the PPF, they represent full efficiency of resources. Full efficiency of resources. और अगर कोई पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ है तो वो हो जाता है हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और अगर कोई पॉइंट अबव द पीपीएफ है तो वो हो जाता है अनअटेनेबल. ठीक है. दैट इज अनअटेनेबल. अच्छा, अनदर थिंग, suppose they ask you that there is a technological growth, so what will happen? इससे आपका जो पीपीएफ है it will shift outwards. It will shift outwards. Similarly, if there is any economic decline, तो पीपीएफ will shift inwards. PPF will shift inwards. Yes, beta. On the curve, on PPF, it means efficient production. It means efficient production. ठीक है. अब क्वेश्चन देखो. Optimal point on PPF depends on. So all of you who have marked the answer as A, as efficiency, that is correct. जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो एफिशिएंट पॉइंट्स कहलाते हैं. द पॉइंट्स ऑन द पीपीएफ, दे आर कॉल्ड एज एफिशिएंट पॉइंट्स. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट विल बी ए, एफिशिएंट पॉइंट्स. ओके बेटा देखो. The production possibility frontier refers to graphical representation of possible combination of two goods. Optimal production ensures that resources are used efficiently. तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू डू दिस बेटर. An indirect utility function is defined over income and prices, assumes profit maximization, is homogeneous of degree 1, all of the above. Try to answer this.
तो बेटा पीपीएफ इज नॉट सेम एज कॉन्ट्रैक्ट कर्व. द टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. नो. कॉन्ट्रैक्ट कर्व सिर्फ जनरल इक्विलिब्रियम में जो हमने पढ़ा था, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व. feasibility is not what defines point on पीपीएफ. जो पॉइंट पीपीएफ के ऊपर है माने हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं. दे रिप्रेजेंट एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर सी 3. ओके, ए सी डी. ठीक है, तो देख लेते हैं जरा बेटा. सो यू रिमेंबर व्हेन माय यूटिलिटी फंक्शन वाज एक्स वाई, इस यूटिलिटी फंक्शन को वी वर कॉलिंग एज डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. u equal to xy was called as direct utility function. And when we had written our utility function like this, m to px m to py माने m square by 4 px py, when we write our utility function in terms of income and prices, उसको हमने बोला था इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. It was called as indirect utility function. So indirect utility function is a function of income and prices. So definitely beta option number A is correct. अब B देखो. It assumes profit maximization. No. When we are finding indirect utility function, we are maximizing utility. या फिर we are minimizing expenditure. So there is nothing related to profit. तो ये गलत है. Is homogeneous of degree 1. देखो, if I find homogeneity, degree of homogeneity, तो कैसे निकाल सकते हैं degree of homogeneity? You will put lambda m and lambda p. तो अगर हम यहाँ पे m की जगह lambda m लिखें और p की जगह पे lambda px लिखें हर जगह पे, what will I go ahead and what will I get? Lambda square m square upon lambda square 4 px py. And beta this will give you m square by 4 px py. माने lambda will be cancelled. तो इसका मतलब तो ये हो गया ना that u of lambda m lambda p is equal to u of mp into lambda to the power 0. तो बेटा absolutely correct. It is homogeneous of degree 0. It is homogeneous of degree 0. तो ये गलत हो गया. So the correct answer to this question is D. It is not homogeneous of degree 1. Sorry, A. It is not homogeneous of degree 1. It is homogeneous of degree 0. So ये भी गलत है, all of the above. So correct answer will be A. So all students who have answered it, A is correct. ठीक है बेटा, come to the next question. Question number 4. Try to answer this question. The market demand function of a commodity is given by dP equal to 1 by P, where P is price of commodity. Which of the following statement about market demand curve is correct? The price elasticity for this commodity is different at different points. The price elasticity is different at different points, varies between 0 and infinity.
The price elasticity is equal to 1 at every point, none of the above. Try to answer this one, beta. Try to answer it in the chat window. देखो मार्केट डिमांड फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, डीपी इज इक्वल टू 1/p. तो डीपी मीन्स डिमांड. डिमांड कैन बी रिटन एज क्यू बेटा. तो क्यू इज इक्वल टू 1/p. माने यहां से हमारे पास आ गया p इंटू क्यू इक्वल टू 1. p इंटू क्यू इक्वल टू 1. अब बेटा p इंटू क्यू इज व्हाट, एक्सपेंडिचर. प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, एक्सपेंडिचर. तो हम कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर इज 1, विच मीन्स आई हैव फिक्स्ड द एक्सपेंडिचर. मैंने अपने एक्सपेंडिचर को फिक्स कर लिया है 1 पे. सो व्हेनेवर एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, व्हेनेवर प्राइस चेंजेस, प्राइस ऊपर हो या नीचे हो जाए, बट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिट इलास्टिक बेटा. इसको हम यूनिट इलास्टिक बोलते हैं. ठीक है, एक और तरीका इसको जानने का, इफ आई ट्राई टू प्लॉट दिस, अगर मैं इसको प्लॉट करूं Q इक्वल टू 1/p को, ठीक है, तो हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं. दैट व्हेन p is 10, then Q will be 1/10. When p is 1/10, Q will be 10. When you will try and plot this, तो आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. You will get rectangular hyperbola. एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का प्रॉपर्टी है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें यूनिट इलास्टिक होता है. इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि इसका एरिया अंडर कर्व इज ऑलवेज सेम. और यहाँ पे एरिया अंडर कर्व क्या होगा बेटा, प्राइस इंटू क्वांटिटी. माने मैं किसी भी पॉइंट पे प्राइस इंटू क्वांटिटी, इफ आई फाइंड दैट आउट, यहाँ पे अगर मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करूं, या अगर मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी यहाँ पे करूं, और आई डू प्राइस इंटू क्वांटिटी हियर, I'll get the same number. Area under the curve will be the same. तो ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है that it is unit elastic, that the price into quantity expenditure is the same. So whenever your expenditure is same, जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 होता. I can put 4 here, 5 here, 10 here, 20 here, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में. I can give you the function Q is equal to 100/p. तो भी this is unit elastic, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस इंटू क्वांटिटी फिक्स हो रहा है 100 पे. द एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड. ठीक है, सो इट विल बी यूनिट इलास्टिक. सो यू आर करेक्ट ऑल ऑफ यू, द आंसर विल बी यूनिट इलास्टिक. ठीक है, ओके. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. In a two good world, consumer preferences over commodity 1 and 2 are represented by this utility function. The consumer income is known to be very high. Demand for good one displays which of the following? Substitution effect is negative, income effect is positive. Substitution effect is positive, income effect is negative. Substitution effect is 0, income effect is positive. Substitution effect is negative and hence there is no income effect. Try to do this. करो बेटा ये क्वेश्चन. Try to answer this.
ओके, तो बेटा देख लेते हैं। द यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय u ऑफ x1 प्लस x2, माने दिस इज क्वाजाई लीनियर प्रेफरेंसेस। यस बेटा, यू विल टेक इट क्वाजाई लीनियर, क्योंकि इट्स अ, यहाँ पे दिस काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शन क्लियरली रिप्रेजेंट्स क्वाजाई लीनियर। दिस कैन बी एनीथिंग, u ऑफ x1 कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, राइट? दिस कैन बी रूट x1, ln x1, कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर टू अस। बट x2 में तो इट इज लीनियर ना, राइट? सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड क्वाजाई लीनियर। आप u ऑफ x1 को कुछ भी लेके सॉल्व कर लो, यू टेक इट एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर। ओके, तो अब देख लेते हैं बेटा। सो सपोज इफ आई टेक u इज इक्वल टू रूट x1 प्लस x2, सपोज मैं ऐसा कुछ ले लेती हूँ, u इज इक्वल टू रूट x1 प्लस x2, ठीक है? सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट वेयर इज माई इक्विलिब्रियम, कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम? वेयर mrs इज इक्वल टू p1 बाय p2, माने mu1 बाय mu2 इक्वल टू p1 बाय p2। इफ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू गुड वन, तो मेरे को मिलेगा 1/2 रूट x1, विद रिस्पेक्ट टू टू मेरे को मिलेगा 1, एंड दिस विल बी p1 बाय p2, माने आई विल गो ahead एंड आई विल गेट x1 इज इक्वल टू p2 बाय 2 p1 होल स्क्वायर, p2 बाय 2 p1 होल स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या चीज एक आइडेंटिफाई हो रही है? I can identify from here that x1 is not a function of income. x1 is not a function of income. Whichever good is coming here, जो भी गुड यहाँ पे नॉन लीनियरली आ रहा है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम, है ना? तो इफ इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम, इट मीन्स दैट इनकम के चेंज होने पे इट विल नॉट चेंज द डिमांड, demand will not change when income will change. Absolutely, that's correct. It's a necessity good, essential good, right? Therefore, there is no income effect. कोई income effect नहीं है इसमें. So we can say that answer number D is correct. There is no income effect. प्राइस इफेक्ट बेटा हमेशा कैसे निकालोगे? प्राइस इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड. So the sign will depend on whether price has decreased or price has increased. It can be +2 or -2, उससे फर्क नहीं. You need to do final demand minus initial demand if you are doing a numerical. ठीक है, take the next question. Do question number 6. In a two good world, suppose that price of one good decreases. Which of the following holds true? If it has not tell anything about income is high or low, then also I will mark this answer. Unless it says that price, I am not able to afford the other good. जैसे for example, बेटा if you remember in the class, हमने देखा था कि जब हमने
है ना? I think there was some issue. So beta, I will be spending my entire income on good one. So then my demand will be M by P1. Then there will be income effect. But वो सिर्फ तब होगा when X2 is unaffordable. Otherwise, अगर आपका income बहुत high है, so your demand for X1 will be this. And when your demand for X1 will be this, it means that automatically there will be no income effect. I hope this is making sense. This is answered for you now. ठीक है? Okay. Try to take question number 6, beta. In a two good world case, the price of one good decreases. Which of the following holds true? Slutsky equation says total change in demand is exactly equal to substitution and income effect. Slutsky equation says total change in demand is less than substitution income effect. Slutsky equation says total is more than substitution and income effect. Slutsky equation does not deal with income effect at all. Okay, that is correct. Most of you have answered it correctly, beta. एकदम ठीक बात है, आंसर होगा ए. तो स्लट्सकी इक्वेशन बोलती है that price effect is equal to substitution effect plus income effect, right? So absolutely that is the correct answer to this question. So answer will be A. ठीक है, next question. Try to answer this better. Suppose a person's utility function is given by uxy and good x and good y are perfect substitute. Then indifference curve are straight line, L shape, U shape, none of the above. For normal good, substitution and income effect is negative. Yes, they move in the same direction and we assume them to be negative. That is correct. Only if you go by Indian authors, they take the income effect to be positive. The foreign authors say that both substitution and income effect move in the same direction and they are negative. That is correct, beta. Clear hai? So substitute goods means uxy is equal to ax plus by. ठीक है? So in this case, your ICs are straight lines. So answer will be A. Correct. Answer is A. For CUT, what should you choose? This statement is correct. You can choose this one. Both substitution and income effect are negative and they move in same direction. ठीक है बेटा. Next question. Bread and apple are substitute goods. A sudden rise in supply of flour making bread will result in. This is very confusing every time for students. Beta, ये हर साल question it remains the same across for students. So, see, substitution and income effect should be moving in the same direction.
And to answer this question, why it happens, just refer to the numerical we did in class. अगर आप वो न्यूमेरिकल देखो तो उस न्यूमेरिकल के हिसाब से और डायग्राम के हिसाब से हमने ये बोला था कि जब प्राइस डिक्रीज होता है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि क्वांटिटी इंक्रीज होती है, और इनकम इफेक्ट बोलता है कि बिकॉज माय रियल इनकम हैज इंक्रीज्ड आई शुड इंक्रीज द क्वांटिटी, देयरफॉर टोटल इफेक्ट सेज दैट आई शुड बी इंक्रीजिंग द क्वांटिटी. माने when price is decreasing, both substitution and income effect are asking me to increase the quantity. है कि नहीं? And if you look at the numerical that we had done in class, उसमें भी यही आया था that both of them had the same sign. So if both have same sign, how can we go ahead and how can we, say that they have different sign for normal good? वो गलत हो जाएगा बोलना. So we will adhere to this that both have same sign. ठीक है. Bread and apple are substitute goods. A sudden rise in the supply of flour making bread will result in fall in the price of bread and rise in the price of apple, fall in the price of bread and fall in the price of apple, fall in the bread and no change in apple. ठीक है बेटा, तो देखो फ्लावर इज यू, अब अगर फ्लावर का हमने सप्लाई इंक्रीज किया तो फ्लावर का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. फ्लावर प्राइस विल डिक्रीज. फ्लावर इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, आटे को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं टू मेक ब्रेड. सो व्हेन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल डिक्रीज देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ब्रेड, ब्रेड का सप्लाई बढ़ जाएगा. फैक्टर अदर देन प्राइस में रॉ मटेरियल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. So if there is increase in the supply of bread, demand of bread, supply of bread is increasing, बेटा it will cause price of bread to fall. तो bread का price decrease हो जाएगा. Bread and apple are substitute goods. So when price of bread will fall, then everyone will shift towards bread. सब bread की तरफ shift हो जाएंगे, right? So there will be a fall in price of bread and everyone will shift towards bread. Everyone will want to demand bread now. Is this clear? So it means that we can go ahead and we can say that the price of bread will fall. But we cannot say anything about apple. आप एप्पल मार्केट के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते. So you cannot say what will happen to the price of apple. हमारा सारा एनालिसिस अराउंड द प्राइस ऑफ ब्रेड रहा है, right? So answer should be C. There will be fall in price of bread, but we have no change in price of apple. अभी के लिए एप्पल मार्केट में कोई असर नहीं हुआ, right? Okay, so answer will be C. Next question, beta. Try to do this one. The utility function of a consumer is given by this, where x1 and x2 denote utility. ux1, ux2 denote utility. ठीक है? Amount of good 1 and good 2 respectively. Unit price of good 1 and good 2 are 1 and 3. Consumer income is 300. Consumer attains equilibrium at. करो बेटा. यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है 3x1 plus x2. प्राइस ऑफ गुड 1 है 1. प्राइस ऑफ गुड 2 है 3. इनकम दिया हुआ है 300. फाइंड इक्विलिब्रियम.
No, beta, no, 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 no. Income effect less than substitution effect for normal good? No. We have not seen the magnitude of income and substitution effect for normal good. Refer to what we have done in class. हमने magnitude की बात ही नहीं की है वहां पे. We have talked about magnitude only in given and inferior goods. We have not talked about magnitude of income and substitution effect in normal good. Please don't take magnitude into consideration. Can't we say demand for apple decreases? Here in this question, we can say that the demand of apple will decrease, but we are not sure. क्योंकि जब price of bread decrease हुआ, अगर इसके बाद भी price of bread is still more than price of apple, फिर क्या करेंगे हम? Suppose पहले price of bread 10 था, price of apple 4 था. अब जब price of bread decrease हुआ, तो price of bread suppose 6 हो गया. Still price of apple is less than price of bread. So we cannot say with certainty that price of apple, has been now more than price of bread. या demand of apple पे क्या फर्क पड़ेगा? We cannot say that. Beta, don't follow HL Ahuja. Follow lecture notes, please. That will not decrease the demand of apple. I just gave you an example. They are substitute goods. But when price of bread is decreasing, there can still be a case where price of apple can be lower than price of bread. तो जरूरी नहीं है कि डिमांड ऑफ एप्पल डिक्रीज होगा ही होगा. यू कैन नॉट से दैट. नो. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. सो बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इज अ सब्स्टिट्यूट गुड यूटिलिटी फंक्शन. तो यहाँ पे एमआरएस क्या होगा? mu1/mu2. If I differentiate with respect to good 1, x1 1 आएगा. या you can do it 3 also, up to you. With respect to x2 तो भी 3 आएगा. So this will give you the answer as 1. MRS is 1. Now better find out P1 by P2. P1 by P2 will be 1 by 3. So compare. MRS is greater than P1 by P2. ये 0.33 है. So if MRS is greater than P1 by P2, you will consume only good 1. If you will consume only good 1, तो good 1 का कितना consumption हो जाएगा? M by P1. And what will be consumption of good 2? 0 units. You are given income is 300. Price is 1. So 300. So it will be 300, 0. So answer will be D. 300, 0. How to know substitution and price effect for any utility function? But वो पूरा जो हमने numericals किए class में, you need to revise those, in which we have done in detail how to find substitution and income effect for normal good, inferior good, for well-defined utility function, min, max. वो सारे example एक बारी देख लो. ठीक है? Okay, do this question now. If the absolute value of price elasticity of demand is greater than 1, we must have, if price increases by 1%, quantity demanded will decrease by less than 1%. Price decreases by 1%, quantity will increase by less than 1%. Price of X increases, expenditure will increase. None of the above. Try to answer this question. Question number 10.
क्वेश्चन नंबर 10। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा ये ग्रेटर देन 1 है। इट मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड greater than percentage change in price है। So if price increases by 1%, तो percentage change in quantity demanded should be more than 1, should be more than 1। तो ये गलत हो गया। If price decreases by 1%, quantity demanded will increase by more than 1। ये भी गलत हो गया। If price of X increases, expenditure will increase। तो बेटा when price increases and expenditure increases, it means price and expenditure are moving in same direction। Price and expenditure are moving in same direction। ठीक है। So what will be the elasticity when price and expenditure move in the same direction? What can you say about elasticity? It is going to be less than 1, inelastic। It means that that is also not correct। So answer will be none of the above, D। ठीक है बेटा, do the next question। Suppose price elasticity of demand of good X is 0.2. If price of X rises by 2.8%, what will be its effect on total expenditure? Expenditure will fall by 5.6%. Expenditure will rise by 5.6%. Expenditure will rise by 2.2%. Expenditure will fall by 2.2%. Try to answer question number 11. Try to answer question number 11. What will be the answer to question number 11, beta? So total expenditure, एक्सपेंडिचर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। माने अगर मेरे को इसको परसेंटेज चेंज में लिखना है, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर कैन बी परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। नाउ ट्राई टू डू दिस बेटा। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन एज 0.2। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज गिवन एज 0.2। ठीक है। अब यहां पे ना, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी टू टू काइंड ऑफ सॉल्व दिस।
क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि whenever you are given the price elasticity of demand, तो we assume that the price elasticity of demand should be negative, क्योंकि डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी है. सो थिंकिंग दैट इट इज अ नॉर्मल गुड, यू शुड बी पुटिंग अ नेगेटिव साइन बेटा. ठीक है. यूजुअली एग्जाम में वैसे -0.2 दिया होना चाहिए, बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी विल एज्यूम इट टू बी अ नॉर्मल गुड एंड हम -0.2 करेंगे उसे. प्राइस इंक्रीजेस बाय 2.8%. सो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 2.8 is -0.2. तो यहां से you will find percentage change in quantity, which will be 2.8 into 0.2 with a negative sign. With a negative sign. ठीक है. ये थोड़ा सा बस इस चीज को हमें देखना होगा कि if it is demand elasticity, then we should be going ahead and we should be putting a negative sign with it. Right? So this will give you the answer as -0.56. Now you can put it here. So this is going to be 2.8 क्योंकि percentage change in price is positive and यहाँ पे change in quantity negative है, -0.56. So 2.8 minus 0.56 is approximately 2.24. So it means that expenditure is going to be 2.24. Percentage change in expenditure will be 2.24. And because यहाँ पे एक positive sign आ रहा है, answer will be C. This is an approximate formula you can use. ठीक है. Answer will be C to this question. ठीक है. Question number 12. Try this better. Suppose there are three alternative X, Y, and Z and four individual 1, 2, 3, and 4. Individuals ranking or ordering of alternative is given by individual 1 X, Y, Z, individual 2 Y, Z, X, individual 3 Z, X, Y, individual 4 X, Y, Z. Then the set of Pareto optimal alternative is. Try to answer this. Try to answer question number 12. It is an interesting but easy question. बेटा देखो, इंडिविजुअल 1 X को Y के ऊपर और Y को Z के ऊपर प्रेफर करता है. इंडिविजुअल 2 Y को Z के ऊपर और Z को X के ऊपर प्रेफर करता है. इंडिविजुअल 3 Z को X के ऊपर और X को Y के ऊपर प्रेफर करता है. और इंडिविजुअल 4 X को Y के ऊपर और Y को Z के ऊपर प्रेफर करता है. राइट. So you need to go ahead and you need to answer that what is the set of Pareto optimal alternatives? X, Y. What is Pareto optimal alternative, beta? In which it is impossible to make
one individual better off without making other worse off. हमें कुछ ऐसा चूज करना है कि हम किसी एक को बेटर करने के लिए दूसरे का यूटिलिटी को डिक्रीज करें. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ पेरेटो ऑप्टिमल ऑल्टरनेटिव. दैट इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड. द करेक्ट आंसर to this question will be answer number C. YZ. YZ. ठीक है. Why YZ is the correct option is what I am leaving you as a homework now. ठीक है. So I have given you the answer to this question. You have to tell me why it should be the Pareto optimal alternative. ठीक है. I have given you a hint also. ठीक है. Try to answer it in the Telegram group beta. Okay. Thank you.